ज्यादा समय नहीं लेंगे, थोड़ा समय इसके बारे में कुछ बताएंगे। तो प्लीज सब कृपया आप बैठिएगा और थोड़ा ध्यानपूर्वक सुनिएगा। Hare Krishna Gurudev, I think you can speak now. Okay, thank you. Om Jnanatimmirandasya Jnananjana Shalakaya Chaksurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Can hear okay? Are you hearing me? Yes, Gurudev. Yes, we can hear. Is it loud enough? You want louder? Okay, Vanchakalpatarubhyascha Kripasindhubhayavacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavedyo Namo Namaha. Namo Vishnupadaya Krishna Pristaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Niti Namane. Namaste Saraswati Devi Kauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So very nice to see everyone there in Bangkok this evening. तो आज शाम को महाराज बोल रहे हैं, सबको देख के मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। So you're having a boat festival. I saw the boat there with Eng-Thai taking the boat. तो आज हमारा बोट फेस्टिवल हो रहा है, तो इधर महाराज बोल रहे हैं कि बहुत प्रसन्नता हो रहे हैं और बोट के ऊपर में भगवान विराजमान थे। Of course, Lord Chaitanya, Lord Nityananda are from Mayapur. Mayapur is one of it's on the islands here, the Navadvip Islands. You have to take boats to go across the Ganga, back and forth across the Ganga or across the Jalangi. तो जब महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु थे तो वो भी बोट में कभी गंगा को पार किया करते थे। ตอนที่มาปูนะคะพระองค์เจ้าโกรังกากับพระองค์เจ้านิตยานันท์เนี่ยก็จะนั่งเรือข้ามฝั่งเหมือนกันนะคะ So the human body is compared to a boat. In the Srimad Bhagavatam, we find the human form of life is compared to a boat. तो श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि मनुष्य का शरीर जो है ये नाव की तरह है। ในสมาบอกว่าตามได้อธิบายไว้ว่าร่างมนุษย์เนี่ยเปรียบเสมือนกับเรือ And the boat has to cross the ocean. The ocean is the material existence. It's an ocean, big ocean. बहुत सागर से पार करना है। เพราะฉะนั้นจุดมุ่งหมายของเรือก็คือเพื่อที่จะสามารถข้ามฝั่งไปได้ So when you cross the ocean, you need to have also a good breeze for the boat to sail nicely. There should be a nice wind to help us go swiftly across the ocean. So that breeze, that is compared to the scriptures. तो जैसे नाव को समुद्र पार करने के लिए हमको अनुकूल वातावरण की आवश्यकता पड़ती है, जैसे उसको बोलते हैं हवा। तो हवा जो है हमारा शास्त्र है जिसके माध्यम से हम पार कर सकते हैं। เพราะฉะนั้นในการข้ามฝั่งนะคะจะต้องมีลมหรือทิศทางลมที่ดีนะคะเหมือนกันก็เหมือนกับการที่เราเนี่ยมีความรู้จักพระคัมภีร์ค่ะก็จะเหมือนกับทิศทางของลม And for the boat to sail nicely, there should be a good
captain on board the ship to guide everyone, to direct everyone so that the ship will go smoothly across the ocean. So the captain of the ship is the spiritual teacher. लेकिन साथ में हमको सही कैप्टन या मार्गदर्शक की भी आवश्यकता पड़ती है, तो जब वो सही दिशा पे चलाएगा तो हम पार कर सकते हैं। และสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือจะต้องมีคนขับเรือที่ดีด้วยนะคะกัปตันเรือที่ดี In Srimad Bhagavatam, in the first canto, chapter 1, you have Sutta Goswami being praised by Shonaka Rishi. Shonaka Rishi is praising Sutta Goswami. He's saying, we accept you as the captain of the ship. तो श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में शौनक ऋषि जो है वो सुत गोस्वामी को बहुत धन्यवाद देते हैं और बताते हैं कि क्योंकि हम सब ने आपको पाया है क्योंकि आप वास्तव में जहाज के कैप्टन की तरह है, क्योंकि आप हमको पार करा सकते हो करके उन्होंने बहुत धन्यवाद दिया उनको। เพราะฉะนั้นในSrimad Bhagavatam ภาคแรกนะคะก็จะมีพวกฤาษีทั้งหลายเนี่ยเขาจะกล่าวคำขอบคุณโซนาการฤาษีนะคะว่าเป็นเพราะว่าท่านเนี่ยเหมือนจะเป็นกัปตันที่ดีแล้วก็ทำให้เราเนี่ยสามารถข้ามฝั่งไปได้ So very important we understand the value of this human form of life. Very special to get the human form of life. मनुष्य जीवन जो है बहुत मूल्यवान है, ये शरीर हमको बार-बार नहीं मिलता। ร่างมนุษย์ที่เราได้มานะคะเป็นร่างที่พิเศษมากเพราะเราจะไม่ได้ร่างนี้เป็นประจำ In Srimad Bhagavatam in 5th canto, Maharaj Jadbharat is speaking to Maharaj Rahugan, and he's telling Maharaj Rahugan, he's telling him that the human form of life is better than even the form of the demigods. तो श्रीमद् भागवतम अष्टम स्कंद में महाराज रहुगण को भरत महाराज बताते हैं कि मनुष्य शरीर यहाँ तक कि देवताओं के शरीर से भी मूल्यवान है, क्योंकि देवताओं की मनुष्य बनना चाहते हैं क्योंकि उनको भगवत धाम प्राप्त नहीं होता जितना जल्दी मनुष्य को प्राप्त होता है।ท่านบรมมหาราชนะคะก็จะบอกกับรากรมหาราชว่าความจริงเนี่ยร่างมนุษย์เนี่ยนะคะมันเป็นโอกาสที่ดีมากเสียกว่าร่างของเทวดาเสียอีก We may envy demigods. We think demigods, they must have a nice life. They're very good looking and intelligent, and they have a lot of opulence, and they live a long life. तो देवताओं के देखेंगे तो हम क्योंकि उनका लंबा जीवन होता है और बहुत सारा धन संपत्ति से सुसंपन्न होते हैं, बहुत सारा भोग कर सकते हैं, ऐसा हम सबको लगता है देवताओं। เพราะฉะนั้นเราอาจจะคิดว่าเราเทวดาเนี่ยมีอายุที่ยืนยาวมีรูปร่างหน้าตาที่ดีงามแล้วก็มีความสะดวกสบายกว่าเราเยอะ But Jadbharat is telling Maharaj Rahugan, actually he said human form of life is better because the demigods, they become very attached to comfort and luxury. It's very difficult for them to become detached and become attached to Krishna. तो जड़भरत रहुगण राजा से बोलते हैं कि मनुष्य शरीर देवताओं से भी अच्छा है, क्योंकि देवता ज्यादा करके शरीर के प्रति या संसार के भोग के प्रति आसक्त हो जाते हैं, तो संसार में आसक्त होने के कारण वो भगवान के प्रति आसक्त नहीं हो पाते। ก็จะอธิบายเพิ่มเติมนะคะบอกว่าความจริงเราเทวดานะคะเนื่องจากเขาเนี่ยจะมีความสะดวกสบายมากเพราะฉะนั้นเขาจะมีความยึดติดกับความสะดวกสบายที่เขาเนี่ยได้รับเพราะฉะนั้นมันจะทำให้เขาเนี่ยค้นหาวิธีการรู้แจ้งแห่งตัวเนี่ยได้ยาก The human form of life is meant for cultivating two qualities, Gyan and Vairag, knowledge and detachment. These things are very necessary. हमको इसलिए मिला है कि हमको ज्ञान प्राप्त करना है और संसार से विरक्त होना है, इसलिए मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। จุดมุ่งหมายของร่างมนุษย์ที่เราได้รับมานะคะก็คือเพื่อให้เราเนี่ยสามารถมีความรู้ได้แล้วก็มีความไม่ยึดติด We see people today,
they don't have any knowledge, they don't know anything from the scriptures, they don't know about the soul, they don't understand the value of human life. तो आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारे मनुष्य हैं, वो जीवन के मूल्य को नहीं जान पाते और वो ऐसा ही अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, संसार में भोग करके, संसार में नाना प्रकार की वस्तुओं को खा के, तो ऐसा उन्होंने अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं इस प्रकार से। เราสามารถเห็นได้นะคะว่าผู้คนในปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะหมกมุ่นอยู่กับการสนองประสาทสัมพันธ์แล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ไปโดยที่ไม่มีจุดมุ่งหมายที่แท้จริงหรือไม่ค้นหาสัจธรรม And they don't have any vairagya. They're very attached. They're very attached to their home and their family and their friends and their country and their money, their bank balance. They only think about these things. तो संसार में आसक्त होने के कारण उनमें किसी भी प्रकार की वैराग्य नहीं होती है और वो घर में, अपने धन संपत्ति में, अपने देश में, अपने सोसाइटी में बहुत आसक्त रहते हैं। เพราะฉะนั้นเนื่องจากเขาไม่มีความรู้นะคะก็จะส่งผลให้เขามีความยึดติดกับสิ่งที่เขามีอยู่ไม่ว่าจะเป็นสังคมครอบครัวหรือว่าสิ่งวัตถุต่างๆที่เขามี In this way they waste the value of the human life because they only think about money and sex. They only want to be comfortable and they think they will live forever in this material world. तो इस प्रकार से वो संसार में आसक्त होकर अपने इंद्रिय पूर्ति के लिए ही काम करते रहते हैं और इस प्रकार वो अपना मूल्यवान जीवन बर्बाद कर रहे हैं। สิ่งที่เขาจะคิดก็คือจะเป็นเรื่องเงินแล้วก็เรื่องเพศสัมพันธ์และการสนองประสาทสัมผัสแล้วก็อยู่อย่างสะดวกสบายนะคะในลักษณะนี้เนี่ยเขาได้ใช้เขาไม่ได้ใช้ประโยชน์ของชีวิตมนุษย์ได้อย่างดี They do not remember the nature of this material world, that it is a place of death. Everyone is dying. और वो ये भूल जाते हैं कि हम इस संसार में हमेशा के लिए नहीं आए हैं और हम सबको एक दिन मृत्यु प्राप्त होना है, ये वो भूल जाते हैं। เขาจะลืมไปว่านะคะความจริงเขามาในโลกวัตถุนี้นะเพื่อเขาจะลืมไปว่าวันหนึ่งเนี่ยเขาจะต้องตาย Right? This planet is called Mrityaloka, planet of death. Bhagavad Gita says one who takes birth will die. Bhagavad Gita says Jatasya hi dhruvam mrityu dhruvam janmam ritasya cha. One who takes birth will have to die. So everyone is dying. From the moment we're born, we're dying. भगवद गीता में बताया गया कि जातु से ध्रुव मृत्यु, जन्म लेते समय से ही मृत्यु शुरू हो गया है, तो जन्म से ही हम मर रहे हैं और ये हम भूल जाते हैं। ในพระคัมภีร์นะคะก็ได้บอกไว้ว่าความจริงเนี่ยมนุษย์ทุกคนเนี่ยเริ่มตายตั้งแต่วันที่เขาเนี่ยได้เกิดมาบนโลกนี้ So we have to prepare for that time when we give up one body. Death is simply the change of the body. It is not something to be worried about, but we should understand what is death. It is simply the change of the body. तो इसलिए हम सबको तैयारी में रहना है कि हम सबको इस शरीर छोड़ना है, तो ये हमको अवसर मिला है कि हम इधर से जाने से पहले तैयार करें कि हमको जाना किधर है। เพราะฉะนั้นนะคะมันก็เป็นสิ่งสำคัญมากที่เราจะต้องเตรียมตัวนะคะเตรียมตัวว่าวันหนึ่งเราจะต้องทิ้งร่างนี้ไป So we have to prepare for the next body. Where do we want to take the next birth? It will depend on our consciousness, which we cultivate in this life. इसलिए हम अपना आगे किधर जाना है वो अभी हमको तैयार करना है। इसलिए ये जो अभी हम कार्यकलाप कर रहे हैं जो भी इस जीवन में, वो हमारा आगे किधर जाना है उसको तय करता है। เพราะฉะนั้นในการเตรียมตัวนะคะเราก็ต้องเตรียมว่าชีวิตต่อไปของเราเนี่ยเราอยากจะได้รับร่างอย่างไรใช่ไหมคะก็คือจิตสำนึกตอนตายของเราเป็นอย่างไรเนี่ยผลของเราก็จะเป็นเช่นนั้นในชาติต่อไป Jadbharat was telling King Rahugan that in his last life, he said, you know, I was also a king previously. Jadbharat, previously, he had been Bharat Maharaj. तो जड़भरत जो थे वो रघुगण राजा से बोल रहे थे कि मैं पूर्व जन्म में राजा था, महाराज भरत नाम का राजा।
เพราะฉะนั้นกษัตริย์ราวรนะคะก็จะฟังจากบารัตมหาราชเจ็ดบารัตมหาราชเขาจะบอกว่าเธอรู้ไหมชาติที่แล้วเนี่ยฉันก็เป็นกษัตริย์เหมือนกัน But Bharat Maharaj had one problem, that he became attached to a deer, and so in his next life he became a deer. तो भरत महाराज को एक समस्या हुई थी कि वो एक हिरण में आसक्त हो गए, इसलिए उनको दूसरा जन्म हिरण का मिला. บารัตมหาราชนะคะมีความยึดติดมากกับกวางตัวหนึ่งนะคะจนอีกชาติหนึ่งเนี่ยเขาได้รับร่างเป็นกวาง Then after birth as a deer, next birth he took in the Brahmana's family, and he pretended to be Jad Bharat. He pretended he was dumb and stupid. He didn't want people to know who he was. तो फिर जब उनको हिरण के बाद फिर एक ब्राह्मण का शरीर मिला था, भरत के नाम था उनका, लेकिन वो पागल की तरह बने और बैरी की तरह बन के घूम रहे थे. เพราะฉะนั้นนะคะอีกชาติหนึ่งเนี่ยก็เลยเกิดเป็นจัดบารัตนะคะซึ่งเขาได้เกิดในครอบครัวของพราหมณ์แต่ว่าเขาเนี่ยทำเป็นว่าไม่รู้เรื่องอะไรแล้วก็แกล้งว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนโง่ So he would pretend to be very stupid. So his family, who were a Brahmana family, they thought this boy is stupid. We can't do anything with him. We can't educate him. He's not very useful. So he was able to leave the home and just go and wander everywhere. तो जब इस प्रकार से वो पागल व्यक्ति की तरह व्यवहार कर रहे थे तो परिवार के लोगों ने सोचा कि कुछ काम का नहीं है, न तो स्कूल गया न कुछ अध्ययन कर पाया, तो फिर घर के लोगों ने भी उनको इनका ध्यान नहीं दिया. तो इस प्रकार वो धीरे धीरे करके घर से बाहर निकल के चले गए. เพราะฉะนั้นเนื่องจากเขาเนี่ยแก้แอบว่าเป็นคนโง่ตั้งแต่เด็กนะคะทางบ้านเนี่ยก็เลยไม่ได้ส่งเสียให้เขาเนี่ยไปโรงเรียนหรือว่าเรียนอะไรเลยนะคะจนเขาเนี่ยคิดว่าคนนี้เนี่ยเป็นคนที่ไม่มีประโยชน์อะไรสุดท้ายเขาก็ออกจากบ้านไป So while he was wandering, Maharaj Rahugan needed someone to carry his palanquin. And they saw Jad Bharat and they thought, he's strong, he can do it, let's take him. तो जब वो इस प्रकार घर से बाहर विचरण कर रहे थे तो उस समय में जो राजा रहुगण थे उनको पालकी उठाने के लिए एक व्यक्ति की आवश्यकता पड़ गई. इसलिए जाके जड़ भरत को देखा तो बोलते ये तो देखने में अच्छा हट्टा-कट्टा लग रहा है, इसी को हम इस्तेमाल करेंगे अपना पालकी उठाने के लिए. แล้วตอนนั้นนะคะก็กษัตริย์เนี่ยกำลังต้องการคนที่จะแบกหามกษัตริย์อยู่ใช่ไหมคะแล้วเห็นจัดบารัตเนี่ยซึ่งมีร่างกายเนี่ยค่อนข้างแข็งแรงเขาก็เลยคิดว่าโอเคเราจะเอาคนนี้มาทำงานตรงนี้ดีกว่า But when Jad Bharat was carrying the palanquin, he was very careful. He didn't want to step on any insects. So it made a big problem for the other people who were trying to carry the palanquin. तो जड़ भरत जब पालकी उठा रहे थे तो उस समय में बहुत ध्यान दे रहे थे कि किसी भी प्राणी का हत्या ना हो, तो नीचे देख रहे थे. तो ऐसा करने से वो पालकी का बैलेंस नहीं मिल पाया, तो बहुत इधर उधर हिल रहा था. เพราะฉะนั้นในระหว่างที่เขาหามแล้วก็เดินนะคะปรากฏว่าเขาเนี่ยมีความระมัดระวังในการเหยียบแมลงหรือว่ามดใช่ไหมคะก็เลยการเดินของเขาเนี่ยก็ขยิงไปก็ขยิงมาซึ่งทำให้ผู้ที่ทำงานกับเขาด้วยคนอื่นเนี่ยได้รับความลำบาก So the king, this Maharaj Rahugan, who was in the palanquin, he got very upset and he told Jad Bharat, you carry the palanquin properly or I'll have you beaten, we'll beat you. तो जब पालकी सही तरीके से नहीं हो रहा था तो ऊपर से राजा बहुत क्रोधित हुआ और बोलते हैं कि तुम अच्छी तरह से उठाओ इसको, नहीं तो मैं तुमको दंड दूंगा, मार दूंगा करके इस प्रकार धमकी दे रहा है राजा. แต่ในกษัตริย์นะคะก็จะบอกกับเขาว่าเธอหาบฉันดีๆนะถ้าเกิดว่าเธอหาบฉันไม่ดีเนี่ยเดี๋ยวฉันจะให้การลงโทษกับเธอเดี๋ยวจะให้คนอื่นเนี่ยมาตีเธอ So then Jad Bharat began to speak spiritual knowledge to the king. And he told the king, he said, you think you're the king and you think I'm your servant. You think I'm your palanquin carrier. You do not know you're the soul. You're not the body. I'm also not the body. I am also a soul. We're all souls. तो जब इस प्रकार राजा बहुत क्रोधित हुआ तो जड़ भरत आध्यात्मिक ज्ञान बोलने लगे. बोलते कि तुमको लगता है कि तुम राजा हो क्या और मैं एक तुम्हारा भार उठाने वाला हूँ? नहीं, वास्तव में हम तो आत्मा है करके वो आत्मा के विषय में चर्चा कर रहे थे.
แต่ทีนี้พอรากอนมหาราชนะบอกจัดบารัตอย่างนั้นใช่ไหมเขาก็ตอบด้วยความรู้ทิพย์ไปว่าเธอคิดว่าอะไรกษัตริย์ความจริงเนี่ยท่านเนี่ยเป็นดวงวิญญาณข้าก็เป็นดวงวิญญาณเหมือนกันพวกเราทุกคนเป็นดวงวิญญาณ Jadbarat told the king, your duty as the king is to give protection to the citizens, but you want to beat me, and you don't care about all the insects. I'm trying not to stamp on the insects, but you just care only about yourself. You're not thinking about other people. तो जड़ भरत बोल रहा है कि देखिए राजा, क्योंकि आपको लग रहा है कि हम ठीक से नहीं उठा रहे हैं, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि आपको राजा है तो सबको रक्षा करना चाहिए और आप तो मुझे मारना चाहते हो, क्योंकि मैं तो सारे प्राणी को देख रहा था कि उनका मृत्यु ना हो, इसलिए इस प्रकार मैं चल रहा था. จันบารัตก็จะตอบว่ากษัตริย์ครับหน้าที่ของท่านก็คือดูแลราษฎรเนี่ยให้อยู่อย่างมีความสุขแต่ว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ข้าพเจ้าพยายามทำก็คือข้าพเจ้าเนี่ยเป็นห่วงดวงวิญญาณอื่นๆที่ถ้าเกิดว่าเราเหยียบเขาเนี่ยเขาอาจจะตายได้ข้าพเจ้าก็เลยทำแบบนี้อยู่ So the king was very surprised to hear Jadbarat speak all of this spiritual knowledge, and he could understand he was a great devotee. तो इस प्रकार सुनने के बाद राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि ये साधारण व्यक्ति इस प्रकार बताता नहीं है और उनको लगा कि ये बहुत बड़ा भक्त है करके. แต่นี้พอมหาราชรากอนได้ยินแบบนี้ใช่ไหมคะเขาก็รู้เลยว่าเจดบารัตเนี่ยไม่ใช่คนธรรมดาแน่นอนเขาเป็นคนที่มีความรู้ทิพย์มากขนาดนี้เขาต้องเป็นดวงวิญญาณพิเศษ So then the king, he got down from his palanquin and he fell at the feet of Jadbarat and he apologized to Jadbarat and he begged him to forgive him if he had offended him for whatever offense, whatever harsh words he had spoken to him. इस प्रकार राजा रघुगण पालकी से उतर गए और जड़ भरत से क्षमा मांगने लगे, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए जो भी यदि मैंने आपको अपशब्द बोला है करके वो विनम्र रूप से क्षमा प्रार्थना करने लगे. แล้วกษัตริย์นะคะก็ลงจากที่เขาแบกนะคะแล้วก็บอกว่าขออภัยขอขมาจากยัดบารัตมหาราชนะคะบอกขอโทษที่ใช้คำพูดที่ไม่สุภาพต่อท่านเลย And the king then begged Jadbarat that you please give some more spiritual knowledge. I want to take advantage of your association. Please enlighten me. Please take away my ignorance and deliver me from material ignorance. और जड़ भरत और राजा रघुगण और बोलने लगे कि कृपया मुझे आध्यात्मिक ज्ञान और दीजिए और मैं तो मूर्ख व्यक्ति हूँ, कृपा करके मुझे भवसागर से पार करने की कृपा कीजिए करके वो प्रार्थना करने लगे. แล้วกษัตริย์ราหุกรนะคะก็จะบอกกับจันบารัตว่าได้โปรดให้ความรู้ทิพย์กับข้าเพิ่มเติมอีกเถอะข้าพเจ้าเนี่ยอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมได้โปรดเมตตาข้าพเจ้าด้วย So Jadbarat explained to the king the nature of the material world and how material life is like a man who goes into the forest where there are many dangers. तो फिर जड़ भरत ने भौतिक संसार के बारे में बताया कि बहुत खतरनाक है, जैसे कोई व्यक्ति जंगल में चला गया हो तो जंगल में बहुत सारे हिंसक पशु होते हैं तो हमेशा खतरा बना रहता है. इसी प्रकार ये भौतिक संसार भी डरावना है. เพราะฉะนั้นนะคะท่านก็จะตอบแล้วว่าความจริงเนี่ยร่างมนุษย์ที่เราได้รับมาใช่ไหมคะก็เหมือนกับการที่เราเนี่ยเดินเข้าไปในป่าช้าซึ่งมันมีภัยอันตรายแล้วก็สิ่งน่ากลัวเต็มไปหมด Just like to make money, people will take many risks. They will go to foreign countries. They will go to foreign places far away from their home. So that sometimes people also go into the forest and they look to find something valuable which they can sell to make some money. तो जिस प्रकार से कोई व्यक्ति धन कमाने के लिए विदेश में जा सकता है तो उधर में बहुत प्रकार का कष्ट सहन करना पड़ता है. इसी प्रकार कि कोई व्यक्ति वन में जाते हैं ताकि उधर में बहुत सारा चीज प्राप्त हो और उसके द्वारा वो धन प्राप्त कर सके. ก็จะมีผู้คนนะคะเพื่อเป็นการหาเงินเนี่ยเขาจะต้องเดินทางไปต่างประเทศนะคะและในการเดินทางไปต่างประเทศเขาก็จะเจอบททดสอบมากมายนะคะ But to get some money, in order to find something valuable,
they have to suffer so many miseries. There is the danger of ferocious animals like the lion, which may come and eat the person. तो जब वन में होते हैं तो उस समय में नाना प्रकार की खतरा होती है, जैसे बहुत सारे हिंसक पशु होते हैं, शेर होते हैं, तो ये पशु कभी भी मार सकते हैं, तो ये खतरा उसको बोलना पड़ता है। เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเดินเข้ามาในป่าใช่ไหมคะในป่าเนี่ยก็จะมีภัยอันตรายจากสัตว์ใหญ่สัตว์เล็กอะไรอย่างนี้มากมาย And then there are snakes. Some snakes, like the python, they will crush, they wrap around the person and they crush the person. And other snakes, they're poisonous. They bite and put the poison into the person. और वन में बहुत सारे हिंसक सांप भी होते हैं या बड़े बड़े अजगर होते हैं, तो कभी कभी व्यक्ति को लपेट के बहुत पीड़ा दे के मारते हैं। เพราะฉะนั้นในป่าใช่ไหมคะบางทีก็จะมีงูแล้วมีสัตว์ที่มีพิษมากมายนะคะซึ่งถ้าโดนกัดอะไรเงี้ยก็จะตายได้โดยง่ายดาย Sometimes they have to climb the mountain, and in the climbing the mountain, there are many thorns and there are many sharp stones, and it's very painful on the feet. The feet suffer very much. और वन में बहुत सारे पर्वतों में चढ़ना पड़ता है और बहुत सारे कांटे हो सकते हैं, तो इन सब का भी पीड़ा उसको सहन करना पड़ता है। เพราะฉะนั้นบางครั้งก็ต้องปีนต้นไม้นะคะเพื่อหนีสัตว์บางชนิดและบางครั้งเวลาเดินก็จะโดนก้อนหินหรือว่าก้านไม้เสียบขาอะไรอย่างนี้ก็มี So the person will suffer so much. Why will he suffer so much? He is trying to please his wife and his children, his family, but it's so difficult to satisfy them. तो इसलिए वो बहुत दुख पाता है, जैसे कि जिस प्रकार से व्यक्ति अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने बीवियों को संतुष्ट करना चाहता है, लेकिन वो कभी संतुष्ट नहीं कर पाता, इसलिए वो दुखी होता है। เพราะฉะนั้นเพื่อที่จะดำรงรักษาครอบครัวนะคะให้ภรรยามีความสุขให้ลูกๆมีความสุขเนี่ยเขาเนี่ยจะต้องดิ้นรนแล้วทำงานอย่างหนัก It is said the happiness in the material life is like a drop of water in the desert. Just like if you're in the desert, it's very dry. मरुभूमि में एक बूंद पानी से तुलना किया गया है। เพราะฉะนั้นได้ความสุขทางวัตถุนะคะได้เปรียบเทียบเหมือนกับน้ำหนึ่งหยดที่เราจะได้รับเมื่อเราอยู่ในทะเลทราย So if you only get one drop of water, it cannot satisfy you. Material life is like that. It cannot give real pleasure. तो एक बूंद पानी से उसकी प्यास नहीं बुझ सकती, इसी प्रकार भौतिक सुख उसी प्रकार है कि कभी हम सुखी नहीं हो सकते। เมื่อเราอยู่ในทะเลทรายใช่ไหมเราก็จะกระหายน้ำเป็นอย่างหนักถ้าเกิดเราได้รับน้ำแค่หยดเดียวเนี่ยเราจะไม่สามารถรู้สึกอิ่มน้ำได้เพราะฉะนั้นเหมือนกันนะคะความสุขวัตถุเนี่ยมันจะไม่ทำให้เรามีความสุขที่แท้จริงได้ The family will complain, the money is not enough, we need more money, go bring more money, it's not enough. और बहुत सारे परिवार के सदस्य जो है बोलते हैं पैसा बहुत कम है और पैसा लेके आओ करके बोलते रहते हैं เพราะฉะนั้นครอบครัวก็จะบอกว่าโอ้ห่างเงินมาแค่นี้ไม่เพียงพอหรอกห่างมาอีกเร็วฉันต้องการอีกต้องการเพิ่ม So Jadbharat was telling all of this to the king, and he told the king, he said, you know, in the past I was also a king. He said, now I'm your now you want me to carry your palanquin, but in the past I was a king. तो महाराज जड़ भरत बोल रहे थे कि आप उन्होंने बहुत सारे भौतिक संसार के बारे में बताया और बोलते कि आप चाहते हो कि मैं आपका पालकी उठाऊं, लेकिन मैं भी पूरा जन्म में आपकी तरह राधा था। แต่ทีนี้จดบารัตนะคะก็จะเล่าให้ฟังว่าความจริงเนี่ยตอนนี้ชาตินี้เนี่ยฉันมาแบกหามท่านอยู่แต่ท่านรู้ไหมว่าชาติที่แล้วเนี่ยฉันก็เป็นกษัตริย์มาก่อนเหมือนกัน Material life is like that. One day you may be king, the next day you are the dog. You're the lowest. You may be in the highest position, next day you're in the lowest position. तो ये भौतिक संसार का नियम ऐसा ही है कि कभी हम राजा बन सकते हैं तो दूसरे दिन कभी कुत्ते भी बन सकते हैं เพราะฉะนั้นชีวิตวัตถุนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้บางวันเนี่ยเราอาจจะยิ่งใหญ่มากเหมือนกับกษัตริย์แต่บางวันเนี่ยเราอาจจะต่ำต้อยมากเหมือนกับสุนัขก็เป็นได้
So we shouldn't waste this valuable human life. We should use this life for getting out of the material world, not trying to be happy here, not trying to be comfortable here. तो इसलिए हम सबको ये मूल्यवान जीवन जो है इसका सदुपयोग करना चाहिए और इसका इस संसार में सुख प्राप्ति के लिए या इधर में हम अच्छी तरह से रहने के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए, जितना जल्दी हो सके इधर से निकलने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। เพราะฉะนั้นเราก็ต้องไหวตัวทันกับสถานการณ์ของโลกวัตถุนี้นะคะแล้วก็พยายามฉวยโอกาสจากวิถีทิพย์เนี่ยอย่างเต็มที่ So whatever we remember, Bhagavad Gita says, Antakales maramevas maranmukvana kalevaram. That the goal of life is to remember Krishna at the time of death. Then you can go to be with Krishna. और भगवद गीता भगवान बोलते हैं कि अंतकाले च मामेव समर्मुक्ता कलेवरम, जब हम अंतिम में भगवान को याद करते शरीर छोड़ेंगे तो हम भगवत धाम चले जाएंगे कृष्ण के साथ। เพราะฉะนั้นในพระกวดกีตานะคะคริชนาก็จะได้บอกไว้ว่าจุดมุ่งหมายสูงสุดของชีวิตก็คือการที่เราเนี่ยสามารถระลึกถึงคริชนาได้ในลมสุดท้ายของชีวิตเราใช่ไหมคะเพื่อเราเนี่ยจะสามารถกลับคืนสู่เหย้าคืนสู่พระองค์ได้ในชาตินี้ In South India, there was a great king. He was one of the Alwars, one of the great saints of the past in South India, in Tamil Nadu. His name was Kulashekar, and he had a very beautiful song where he says, Krishna Tvadiya Padapankaja Panjarantam Ajaiva me Vishatu Manasaraja Hamsa Prana Prayana Kapaye Kapavatapitaye Kantavaro Dhanavido Smaranam Kudaste. Maharaj Kulashekar is praying, let me die now while I can think of Krishna. तो दक्षिण भारत में एक बहुत राजा थे जिनका नाम था कुलशेखर। तो उन्होंने एक भजन में ऐसा लिखा है कि बोलते हैं कि प्रभु मुझे अभी मरना है, क्योंकि मुझे अभी आपका स्मरण करने को हो रहा है, इसलिए मुझे अभी मरना है करके वो भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। มีมาเราชื่อว่าคูรุเชคค่ะนะคะอยู่ทางภาคใต้ของประเทศอินเดียนะคะท่านเนี่ยได้ขับร้องบาจานะหนึ่งที่เมื่อกี้นี้มารับร้องนะคะในนั้นเนี่ยความหมายมีอยู่ว่าขอให้ข้าพเจ้าเนี่ยได้ตายตอนนี้ตอนที่ข้าพเจ้าเนี่ยสามารถระลึกถึงคริชนาได้อยู่ When the mind is fixed on Krishna, then it is like Rajahamsa, it's like the swan. Just like the swan it gets lotus flower to wrap around its neck. So when our mind is fixed on Krishna, then our mind is like that swan wrapped at the lotus feet of Krishna. तो जब मन कृष्ण को याद कर सकता है तो उसको बोलते राजहंस, क्योंकि राजहंस हमेशा कमल फूल के सामने रहता है या उनको पकड़ के रहता है। इसी प्रकार जब हमारा मन कृष्ण को याद करता है तो कृष्ण के चरण रूपी कमल को वो पकड़ सकता है। เพราะฉะนั้นนะคะการที่จิตใจเราเนี่ยจดจ่อกับคริชนาเนี่ยก็จะสามารถทำให้วันหนึ่งเนี่ยเราสามารถยึดอยู่กับพระบาทของพระองค์ได้ He said, let me die now while I can still chant. If I have to wait till I die in old age, my throat will be choked up with mucus. I won't be able to chant. So better I die now while I can still chant. और राजा बोलता है कि मैं बुढ़ापे तक प्रतीक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि बुढ़ापा होने से वाणी रुक जाती है, सांस लेने में मुश्किल पड़ जाती है, कफ से कंठा अवरुद्ध हो जाता है। इसलिए अभी मुझे सब ठीक है, मेरा स्वास्थ्य भी ठीक है, इसलिए अभी आपको याद करते हुए अभी मरना चाहता हूँ करके बोल रहे हैं। ท่านจะปรารถนานะคะบอกว่าข้าพเจ้าเนี่ยไม่อยากจะตายตอนแก่เพราะว่าตอนแก่เนี่ยทุกอย่างมันจะเริ่มเสื่อมแม้แต่การได้ยินการพูดหรือการออกเสียงนะคะมันจะไม่ชัดเจนไปหมดแล้วความจำความลืมมันจะมาเยอะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยตอนนี้ร่างกายข้าพเจ้ายังแข็งแรงอยู่แล้วข้าพเจ้ายังสามารถระลึกพระองค์ได้ดีอยู่เนี่ยตอนนี้เนี่ยข้าพเจ้าอยากตายตอนนี้ So we're practicing, we want to practice fixing the mind on Krishna, bringing the mind to think of Krishna. It's all practice. इसलिए हम ये अभ्यास कर रहे हैं कि हमेशा मन भगवान में लगा रहे। เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเราก็ต้องฝึกตัวเองนะคะฝึกฝนในการที่จะให้จิตใจของเราเนี่ยจดจ่ออยู่ที่พระองค์ We may say very difficult to think of Krishna.
Krishna says, Abhyasena tu konteya vairagena chakri. Two things are required, practice and detachment. लेकिन इतना आसान नहीं है और भगवान खुद बोलते हैं कि किया जा सकता है यदि हम इसको वैराग्य और अभ्यास से करेंगे तो हो सकता है เพราะฉะนั้นนะคะในการที่เราจะระลึกถึงพระองค์เนี่ยบางคนอาจจะคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะแต่เราเนี่ยสามารถจะทำได้นะคะโดยคริชนาบอกว่าเราจะต้องใช้ความพยายามแล้วก็การไม่ยึดติด So we wish you good luck in your practice. We hope you will fix your mind on Krishna, and we wish you will have all success in this life. Hare Krishna. और हम आशा करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आप सबका मन भी इसी तरह कृष्ण में लगा रहे और अंत में आपको भी कृष्ण की प्राप्ति हो करके महाराज हम सबको आशीर्वाद दे रहे हैं เพราะฉะนั้นมหาราชก็ให้พรกับพวกเราทุกคนนะคะในวันนี้ว่าขอให้พวกเราทุกคนเนี่ยสามารถตั้งใจนะคะจิตใจเนี่ยจดจ่ออยู่ที่คริชนาแล้วก็ทำวิธีตรงนี้นะให้สำเร็จปฏิบัติตรงนี้ได้สำเร็จ So my thanks to Purnamasi Mataji for arranging this program and for giving me the opportunity to speak to everyone. और मैं पूर्णमासी माता जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतना अच्छा उत्सव का आयोजन किया है और मुझे इसमें बोलने के लिए अवसर प्रदान किया है ก็ขอขอบคุณปุณณมาสีมาตจีนะคะที่วันนี้ได้จัดโปรแกรมอันดีนี้ขึ้นแล้วก็ได้ให้โอกาสมาราชได้พูดตรงนี้ด้วย Srila Prabhupada ki jai. Yeah. Lord Bhaktivinoda Swami Maharaj ki Lord Bhaktivinoda ki jai. So I end the call here. Yeah, okay. Hare Krishna. Hare Krishna.